एंड पैलेट में ले रही हूँ ये वाला मेकअप रिवोल्यूशन का, ठीक है। एंड इसमें से ब्लैक शेड ले रही हूँ। आप कौन सी भी पैलेट में से ब्लैक शेड यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर क्रीजेस ना हो आपके आईलिड के ऊपर। पैक कर ले फिंगर के हेल्प से, हल्के हाथों से। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर पैक कर रही हूँ इस ब्लैक शेड को। तो यहाँ पर मैं इस स्मोकी आई को क्रिएट करने के लिए ब्लैक काजल या जेल लाइनर, जेल वगैरह ब्लैक कोई भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली शेड को पैक कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कंसीलर को सेट नहीं किया है, मैं डायरेक्टली ब्लैक कलर का शेडो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो ब्लैक आई शेडो होता है वो भी पाउडरी फॉर्म में होता है, तो डायरेक्टली अच्छा उसका पिगमेंटेशन हमें मिलेगा, इसीलिए मैंने डायरेक्टली पैक किया है, ठीक है, विदाउट सेटिंग माई कंसीलर। तो इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। मेक श्योर आप क्रीज के अबाव बिल्कुल भी ना जाए, ठीक है। बस इतना ही आपको अप्लाई करना है एंड मेक श्योर आप थोड़ा थोड़ा एजेस को डिफ्यूज़ भी कर दें। उसके बाद मैंने ये वाला ब्रश लिया है जो कि है मिनी ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है, ये बूजी ब्यूटी का है। तो इससे मैं इसके एजेस को अभी डिफ्यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर सर्कुलर मोशन एंड विंडशील्ड वाइपिंग मोशन में ब्लेंड कर लेंगे बिफोर यूजिंग सेकेंड शेड।
ग्लिटर अप्लाई कर लिया है चीक्स के हाई पॉइंट में एंड आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक है ये. And yeah, this is my final look, finished look guys, and I hope you enjoyed this tutorial. And yeah, if you find this tutorial helpful and if you learned something from this tutorial, make sure you like the video, and if you're new to my channel, don't forget to subscribe with bell icon and click all to get notified every time. And yes, if you're not following me on Instagram, go and follow me right now, where I share mini tutorial and daily updates on my stories. And yeah, if you're in case recreating this look, don't forget to tag me on Instagram. I would love to share it on my story. And yeah, enjoyed creating this look. Hope you enjoyed this tutorial. I'll see you in my next brand new tutorial. Till then, take care and bye bye.